नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है टेस्ट ऑफ नॉलेज सीरीज जिसमें आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की। और ये एयर पोल्यूशन का पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगी। और ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट, गेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपीएससी, बीपीएससी या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी के सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स एज गुरु दक्षिणा। और कोई फीस नहीं देनी, सब कुछ फ्री है। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following atmospheric gases cannot be removed by hydroxyl radicals in a saturated atmosphere? Saturated atmosphere is the one which has maximum amount of water vapor. ठीक है, तो उसमें एटमोस्फेयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है और उस वाटर वेपर से कौन सी ऐसी गैस है जो रिमूव नहीं की जा सकती है, मतलब वो गैस जो वाटर वेपर से रिएक्ट नहीं करेगी। और वाटर हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो होता है वो वाटर वेपर में ही होता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्ट करेगा। सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ऐसा है जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल से रिएक्ट नहीं करता है। ये एक इनर्ट गैस है और इसीलिए हायर एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाता है और बाद में इसी की वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। और हाइड्रोक्सिल रेडिकल क्या होता है वो यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है और जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, तो ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है। ठीक है, आंसर इज ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ट्रैफिक पुलिसमैन इन सिटीज ऑफन सफर फ्रॉम हिपोक्सिया। हिपोक्सिया मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। चेक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो इन रिगार्ड टू द अबव स्टेटमेंट। तो ऊपर का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से सही स्टेटमेंट कौन सा है? हिपोक्सिया इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन ब्लड caused by carbon monoxide, as carbon monoxide forms complex with the blood and reduces the oxygen carrying capacity of the blood. तो हिपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड से कॉम्प्लेक्स बना देता है और ब्लड से ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देता है। एज अ रिजल्ट ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है, वो कम हो जाता है। इसके अलावा हिपोक्सिया इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन ब्लड caused by carbon dioxide, as carbon dioxide forms complex with the blood and reduces the oxygen carrying capacity of the blood. This is not true क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उतनी हाईली रिएक्टिव गैस नहीं है। हिपोक्सिया is oxygen deficiency in blood caused by SO2, and as SO2 forms complex with the blood and reduces oxygen carrying capacity of the blood. ये भी सही नहीं है, तो D all of the above is clearly not the correct answer. A is the correct answer. Hypoxia is oxygen deficiency in the blood caused by carbon monoxide. Okay, correct answer is A. Let's move on to question number 3. According to the Gaussian plume model, the effective stack height is the sum of the stack height and plume rise. Which of the following factors affects plume rise? तो प्लूम्स क्या होता है, इसके पिछले प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने आपको बताया था। तो प्लूम राइज क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। अब प्लूम राइज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ए, buoyancy of exhaust gases, B, momentum of exhaust gases. मोमेंटम का फॉर्मूला है P, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। तो मास यहाँ होगा मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस और वेलोसिटी की किस स्पीड से एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं बाहर। सी, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, या डी, रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैसेस। Q इज इक्वल टू AV, Q इज इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन ऑफ गैसेस and that equals A, that is area of the stack into velocity, velocity with which the smoke is coming out. ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला बता दिया है ताकि अगर फॉर्मूला से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आपको आए तो आप आंसर कर सके। चूज फ्रॉम द कोड्स बिलो। A, B and C are correct, A and B are correct, A and C are correct, A, B, C and D are correct. D is the correct answer. All of these factors affect plume rise. Buoyancy of exhaust gases, momentum of exhaust gases, atmospheric stability, most important factor, and rate of emission of gases. These are all important factors that determine the plume rise. की plume rise मतलब plume कितने height तक ऊपर जाएगा। Match. And plume is the column of smoke coming out of a chimney. Match the following items from list 1 with list 2. List 1 aerosols है और list 2 source है। Primary natural aerosols. प्राइमरी मतलब मेन जो कि अभी शुरू हुआ है और नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक। और प्राइमरी मतलब होता है कि उसमें कोई और फेज नहीं है, पहला ही फेज है। क्या होगा? सॉइल डस्ट प्राइमरी फेज है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, मिट्टी की धूल है। A has to be matched with 4. Let's look at the option in which A is matched with 4. Option D, A is matched with 4. And in the same option B is matched with 1. Secondary natural aerosol. Organic matter from biogenesis. Natural aerosol. So organic matter from biogenesis, that is life from life, is natural. But it is secondary because it is not a naturally occurring thing. It occurred from nature. तो organic matter from biogenesis की plant वगैरह का organic matter या animals के through organic matter, तो ये नेचुरल तो है पर ये सेकेंडरी है। मिट्टी से उत्पन्न हुए है ना जानवर और पेड़ पौधे,
तो सेकेंडरी है, किसी चीज से उत्पन्न हुआ, तो प्राइमरी हो गई सॉइल और एनवायरमेंट, और सेकेंडरी हो गया ऑर्गेनिक मैटर। और नेचुरल है तो प्राइमरी नेचुरल, सेकेंडरी नेचुरल एरोसॉल, ये यहाँ से उसका सोर्स ये होगा, ठीक है। C has to be matched with 2. Primary anthropogenic aerosol. Anthropogenic is human induced, man induced या man made. लेकिन प्राइमरी है तो वो क्या होगा, वो होगा 2. सूट फ्रॉम बायोमास बर्निंग, कि नेचुरल बायोमास था उसको हमने बर्न किया और उससे कालिक निकली, कार्बन निकला, तो प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एरोसॉल है। D, secondary anthropogenic aerosol. D has to be matched with 3. Sulfate aerosol from power plant. So first we dug out coal, ठीक है, and then we burnt it in thermal power plant, and then it emitted smoke which had sulfate. So that is a secondary process. Secondary anthropogenic aerosol is sulfate aerosol from power plants. Correct option is D. ठीक है. Question number 5. Residence time of any pollutant in atmosphere is the same as A. Its lifespan in the atmosphere, the time after which it will be removed from the atmosphere. Both A and B या D, none of the above. The correct answer is C. Both A and B. Its lifespan in the atmosphere, जितने दिन तक वो एटमॉस्फेयर में रहता है, the time after which it will be removed from the atmosphere, और जितने समय के बाद वो एटमॉस्फेयर से हटा के जमीन पे आ जाता है। बोथ, दोनों बातों का मतलब एक ही है, तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक ही बात को कहने का दो तरीका है। सो टू थिंग्स, two ways of saying the same thing. Okay. Question 6. If the lifespan of NO2, nitrogen dioxide, in the atmosphere is 0.693 days, then its residence time will be. तो lifespan अगर pollutant का, NO2 का, nitrogen dioxide का 0.693 days है, तो residence time कितना होगा? 0.693 days, because it is the time for which the gas resides in the atmosphere, or that is the lifespan. It's the same thing. Again, ये इंटेंशनली मैंने दो क्वेश्चंस को रखा ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं लाइफ स्पैन। ठीक है। क्वेश्चन 7, which of the following statements about mixing height of air pollutants is true? और ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है कि मिक्सिंग हाइट क्या होती है। A, mixing height is the distance between the earth's surface and the bottom of the inversion layer above the stack. तो मिक्सिंग हाइट is different from plume rise, इसलिए ये क्वेश्चन है, so please be careful. Mixing height is the distance between Earth's surface and the bottom of the inversion layer. तो मैं यहाँ पे annotate करके आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जैसे ये अर्थ का सरफेस है और ये कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, और ये चिमनी है। अब यहाँ से ये एग्जॉस्ट निकल, और यहाँ कोई इन्वर्जन लेयर है, इन्वर्जन यहाँ है, ठीक है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि इन्वर्जन लेयर के बियॉन्ड मिक्सिंग नहीं होती है पोल्यूटेंट्स की। तो अर्थ की जो हाइट है, अर्थ की जो हाइट है यहाँ 0 किलोमीटर, और यहाँ से लेके इस हाइट तक, ये होगा मिक्सिंग हाइट। ठीक है, तो हाइट, मिक्सिंग हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सरफेस यहाँ एंड द बॉटम ऑफ द इन्वर्जन लेयर यहाँ तक। ठीक है, सो यही होता है मिक्सिंग हाइट। दिस इज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। Option B, mixing height is the distance between Earth's surface and the top of the inversion layer. No, it is important because it determines the vertical mixing of air pollutants. True, क्योंकि air pollutant कितना ऊपर तक जाएगा उससे वो determine करता है mixing height. ठीक है, the air pollutants do not mix beyond the mixing height. ये भी सही है, मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया। So इसका आंसर होगा A, C and D। तो ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो A, C and D is the correct answer. ठीक है। Question number 8. Why are tall stacks installed in thermal power plants? A, it ensures dispersal of pollutants away from the ground. True. B, ground level concentration of pollutants is inversely proportional to the stack height. This is not completely true because ground level concentration of pollutants is inversely proportional to the effective stack height. और जो effective stack height होता है वो होता है H is equal to, effective stack height is equal to HS plus delta H, which is वहां जाके HS is equal to stack height plus delta H is equal to plume rise। जितनी ऊंचाई तक चिमनी के प्लूम ऊंचा उड़ता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. The urban air pollutant which irritates both eyes and respiratory tract of humans is particulate matter? No. Oxides of nitrogen? No. Carbon monoxide? No. It is surface ozone. It irritates the eyes and the nasal chamber.
Okay, C is the correct answer. Question number 10. If 4 groups of vehicles consisting of 5, 10, and 12 and 8 cars emitted 1.2, 2.1, 3, and 1.5 kg per car per day respectively, then what would be the mean emission of gaseous pollutants from all cars? तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे. Group of 5 vehicles emits 1.2 kg of pollutants per day. So together 5 vehicle will emit 1.2 into 5, that is 6 kg of emissions per day. Similarly, group of 10 vehicles, 10 कारों का जो ग्रुप है वो 2.1 kg पर कार इमिट करता है. तो 10 कार टोटल मिला के कितना इमिट करेगा? 2.1 into 10 is equal to 21 kg. Similarly, group of 12 cars emits 3 kg of pollutants per car per day. So together 12 cars will emit 3 into 12 is equal to 36 kg per day. Similarly, group of 8 car emits 1.5 kg per day. Together 8 cars emit 8 into 1.5 kg, that is 12 kg per day. Total emission from all sources, all cars will be sum of all emissions divided by total number of vehicles. So sum of all emissions comes to be 75 divided by total number of vehicles, that is 35. Answer is 2.14 kg. So B is the correct answer. I hope what we discussed today was useful for you. In case you have any doubts or disagreements, please do let me know in the comments below. And please check out the description box for more practice tests and preparation of UGC NET or other competitive exams related to environmental sciences. And don't forget my Guru Dakshina. Jai Hind.